So in this particular inheritance, let's see what happened. We have a class called red. Okay. So this is an independent class, right? It is not derived from anything. Red class is there. In this, we have one function, red function, and when we'll call this function, it will just print red. We have a yellow class. Inside that, we have a yellow function, and you can see that this is actually not a function. This is actually the constructor. So function has the same name as class name and doesn't have any return type, and it doesn't have any parameter. So you can see that this is a default argument. This argument is default constructor, because it doesn't have any argument, is called default constructor. And whenever we create the object of red, whenever we create the object of yellow, this constructor will be called. So once it will call, it will display red. Once this will call, it will display yellow. Then we have another function, another class, which is called blue. And inside the blue class, we have another constructor called blue, and it will print blue. Okay. Then we have orange. Okay. So this is how it look like. So we have green class. Green class is derived from blue and yellow, and it is printing green. Violet class is derived from red and blue. It is telling us the violet. Reddish brown is derived from orange and violet, and it is saying it is just printing reddish brown if we are making the object of it. Then yellowish brown, it will be constructed from green and orange. It is just printing yellowish brown. Then we have brownish, bluish brown. It will be constructed from violet and green. And we have it will print the bluish brown. And how many object we have created? We have created the object of reddish brown. We have created the object of yellowish brown. We have created the object of brownish brown. Okay, let's see this program, and we'll understand what is that program is and how it is working and how it look like. Okay. So let's see what is there in the program. In the program, we have a class called red. So we have a class called red. Okay, red is one class. Fine. What is the next class? Next class is yellow. Yellow is another class. Got it? Now, what is that? Blue. Blue is another class. Blue is another class. Okay. Fine. Then we have orange. Orange is derived from red and yellow. So orange is derived from red and yellow. Done. Okay. Then green is from blue and yellow. Green is derived from blue and yellow. Fine. Then violet. Violet is derived from red and blue. Okay. Violet is derived from red and blue. Okay. Then reddish brown is derived from orange and violet. Orange and violet. Reddish blue, RADD, is derived from orange and violet. So we have orange and
and violet. Yes, so it is derived from that. Fine. Then we have yellowish, brown, green, and orange. Where is green? This is green. And where is orange? This. So, yellowish, brown is derived from yellowish, brown is from green and orange and green. Orange and green. Okay, now next we have bluish brown, which is from violet and green. Where is violet? Violet here and green here. This is called bluish brown. Bluish brown. Violet and green. So you can see this is how it look like. Okay, so you'll ask me that where is hierarchical? So hierarchical means we have one base class and we have multiple derived class. Do we have this scenario here? We have one base class. See, we have red is a one base class and we are having orange and orange and violet as the, so it is a mixture of it. So this particular example is a mixture of different, so this is, you can say that is an example of hybrid. Here we have hierarchical as well as we have multiple also, because red and yellow and blue, or red and yellow is giving birth of orange. Yellow and blue is giving birth of green, right? So this is a hybrid approach. I'll let you know that when this particular thing will come, hierarchical. Okay. We'll see some more example on that. So this is an example of hybrid inheritance. We have what is hybrid? Hybrid is the combination of multiple plus hierarchical. Okay, multiple plus hierarchical inheritance is called hybrid. So this is a hybrid approach. Now you come to this main here. We have created a object of reddish brown. Where is reddish brown? This reddish brown. Wait a minute. This is reddish brown. This is not reddish blue. Actually, this is reddish brown. So we have created the object of reddish brown, which is R. This R, when once we'll create this particular object, then what will happen? Then constructor will be called definitely. So reddish is derived from reddish brown is derived from orange and violet. So which constructor will be called first? So you can see here, once we'll derive this, so the constructor of the orange and the violet is also be the part of this. So the constructor of orange will be calling, then constructor of violet will be calling, and then constructor of reddish brown will be called. So once constructor of orange will be called, orange is going to print. When the violet will be called, violet is going to print, and when the reddish will be called, reddish brown will be print. So you can see once we'll create one constructor, once we'll create one object, three constructor will be called. Getting it? So कौन कौन सा constructor call होगा? So orange का constructor call होगा,
तो ऑरेंज प्रिंट होगा, देन वायलेट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो वायलेट प्रिंट होगा, और फिर उसके बाद रेडिश ब्राउन का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो रेडिश ब्राउन प्रिंट होगा। ठीक, ये हो गया हमारा एक ऑब्जेक्ट बना दो R1। उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट बना है, Y ऑब्जेक्ट बना है येलोइश ब्राउन का। तो एक Y ऑब्जेक्ट बना है येलोइश ब्राउन। तो येलोइश ब्राउन में देखते हैं क्या क्या है। येलोइश ब्राउन में देखो ग्रीन और ऑरेंज ये दोनों है, तो ये दोनों का जो कंस्ट्रक्टर है वो भी यहाँ पर आ जाएगा, ग्रीन और ऑरेंज का। तो आप देखो ग्रीन और ऑरेंज कहाँ पर है, यहाँ पर है। ग्रीन, तो ग्रीन किससे बना हुआ है, येलो और ब्लू से। तो क्या प्रिंट होना चाहिए, पहले येलो प्रिंट होगा, फिर ब्लू प्रिंट होगा, फिर ग्रीन प्रिंट होगा, राइट। और ग्रीन के बाद फिर ऑरेंज आ जाओ, तो ग्रीन भी प्रिंट होगा, फिर उसके बाद रेड प्रिंट होगा, येलो प्रिंट होगा, ऑरेंज प्रिंट होगा। वैसे ही यहाँ पर जब ऑरेंज का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो डेफिनेटली ऑरेंज से पहले आई थिंक रेड प्रिंट होगा यहाँ पर, एंड देन येलो प्रिंट होगा, क्योंकि ऑरेंज का जो ऑरेंज इज अ derived class from base class red and yellow, so red and yellow is going to be printed, एंड देन वायलेट कॉल होने से पहले क्या क्या प्रिंट होगा, रेड और ब्लू, क्योंकि वायलेट किससे किससे बना हुआ है, रेड और ब्लू से। तो प्रिंट होगा रेड, देन ब्लू, BLUE, ब्लू, रेड प्रिंट होगा, ब्लू प्रिंट होगा, उसके बाद वायलेट प्रिंट होगा, और उसके बाद आपका क्या प्रिंट होगा, रेडिश ब्राउन। वैसे ही येलोइश ब्राउन के लिए क्या क्या प्रिंट होगा, देखो येलोइश ब्राउन के लिए क्या क्या प्रिंट होगा, वायलेट का कंस्ट्रक्टर और ग्रीन का कंस्ट्रक्टर। तो वायलेट किससे बना हुआ है, वायलेट बना हुआ है रेड से और ब्लू से, तो रेड और ब्लू पहले प्रिंट होगा, उसके बाद वायलेट प्रिंट होगा, और उसके बाद फिर ग्रीन, ग्रीन किससे बना हुआ है देख लो, ब्लू और येलो, तो ब्लू और येलो पहले प्रिंट होगा, उसके बाद ग्रीन प्रिंट होगा। ठीक, तो क्या क्या प्रिंट होगा यहाँ पर, यहाँ पर प्रिंट होगा येलोइश ब्राउन, येलोइश ब्राउन, येलोइश ब्राउन, ग्रीन, ग्रीन का देख लो क्या क्या है, ग्रीन किससे किससे बना हुआ है, येलो और ब्लू से, तो येलो और ब्लू पहले प्रिंट होगा, येलो, फिर होगा ब्लू, ब्लू, उसके बाद क्या प्रिंट हुआ, येलो और ब्लू के बाद प्रिंट हुआ ग्रीन, ग्रीन का खत्म हुआ, उसके बाद हुआ ऑरेंज। ऑरेंज किससे बना हुआ है, यहाँ पर डायग्राम में देख लो, ऑरेंज बना हुआ है रेड और येलो से, तो प्रिंट होगा रेड, येलो, उसके बाद ऑरेंज। ठीक, अब ये काम खत्म हो गया किसका किसका, ग्रीन और ऑरेंज हो गया, फिर उसके बाद प्रिंट होगा येलोइश ब्राउन। ठीक, ये प्रिंट हुआ जब हम क्रिएट किए y को, जब हम क्रिएट किए R1 को, तो ये सब प्रिंट होगा। और एक और ऑब्जेक्ट है जो कि है B, B किसका है, ब्लूइश ब्राउन के लिए। तो ब्लूइश ब्राउन एक B क्रिएट किए हमारा, ये है ब्लूइश ब्राउन। जब हम लोग ब्लूइश ब्राउन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो ब्लूइश ब्राउन के अंदर क्या क्या कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर वायलेट का है और ग्रीन का है। और वायलेट और ग्रीन के अंदर क्या क्या है, तो वायलेट के अंदर देखो रेड है और ब्लू है, तो पहले प्रिंट होगा रेड, फिर होगा ब्लू, फिर होगा वायलेट। ओके, उसके बाद आ जाओ ग्रीन। तो ग्रीन किससे किससे बना हुआ है, ग्रीन बना हुआ है आपका येलो और ब्लू से, तो येलो और ब्लू पहले प्रिंट होगा, येलो, देन ब्लू, उसके बाद ग्रीन, और ग्रीन से क्या बना हुआ है आपका ब्लूइश ब्राउन, तो लास्ट में ब्लूइश, BLU, ब्लूइश ब्राउन। ओके,
So this is how it is going to print. So this is the first bunch which is going to print, second bunch, and this is the third bunch. Okay, चलो देखते हैं अपना क्या क्या प्रिंट होता है. तो जैसा कि आप देख सकते हो क्या प्रिंट हुआ, देखो येलो, सॉरी रेड येलो, रेड येलो, उसके बाद क्या है, रेड येलो से क्या बना है, ऑरेंज बना है, तो ये प्रिंट हो गया. उसके बाद प्रिंट हुआ ऑरेंज, फिर उसके बाद रेड ब्लू, रेड ब्लू उससे क्या बना हुआ है, वायलेट, तो रेड ब्लू उससे बन गया वायलेट. फिर क्या प्रिंट हुआ, रेडिश, लास्ट में रेडिश ब्राउन. ठीक, ये हुआ पहला जब हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाए तब. समझ में आया. अभी आ जाओ दूसरा कंस्ट्रक्टर जब बन रहा है, दूसरा कंस्ट्रक्टर वाई बन रहा है, उसमें क्या प्रिंट होगा, येलो ब्लू, सॉरी ब्लू येलो प्रिंट हुआ. पहले प्रिंट हुआ ब्लू, उसके बाद येलो, फिर उसके बाद ग्रीन प्रिंट हुआ, ग्रीन, फिर उसके बाद रेड येलो, उसके बाद हो गया रेड येलो, रेड येलो के बाद ऑरेंज, ऑरेंज, उसके बाद येलोइश ब्राउन, उसके बाद येलोइश ब्राउन. ठीक, अब आ जाओ लास्ट, लास्ट कंस्ट्रक्टर, उसमें क्या है, रेड ब्लू, लास्ट कंस्ट्रक्टर है ये, इसमें क्या प्रिंट हुआ, रेड ब्लू, उसके बाद वायलेट, उसके बाद वायलेट, फिर ब्लू येलो, ब्लू PLU, ब्लू येलो, उसके बाद ग्रीन, ग्रीन, फिर ब्लूइश ब्राउन. समझ में आया ये कैसे हुआ. तो जब भी हम लोग कोई डेराइव क्लास बनाते हैं तो डेराइव क्लास में क्या आ जाता है, बेस क्लास का जो भी होगा डेटा या फंक्शन. ठीक, तो जब हम देख रहे हैं कि मल्टीपल बेस क्लासेस हैं तो मल्टीपल उसके जो भी होंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कंस्ट्रक्टर है तो कंस्ट्रक्टर कॉपी होगा, कंस्ट्रक्टर इज ऑल्सो अ फंक्शन, राइट. सो दैट फंक्शन विल बी कॉपीड टू हियर इन ऑरेंज. अभी जब भी हम लोग ऑरेंज का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो रेड और येलो प्रिंट होगा. अभी देखो ऑरेंज से क्या क्या बन रहा है, ऑरेंज से रेडिश ब्राउन और वायलेट से भी रेडिश ब्राउन. वायलेट किससे किससे बन रहा है, रेड और ब्लू से. तो जब हम रेडिश ब्राउन का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या क्या प्रिंट हुआ, तो ऑरेंज से रिलेटेड रेड और येलो प्रिंट हुआ, फिर ऑरेंज प्रिंट हुआ, फिर वायलेट से रिलेटेड रेड और ब्लू प्रिंट हुआ, फिर वायलेट प्रिंट हुआ, फिर खुद का कंस्ट्रक्टर कॉल. तो इस तरह से सीक्वेंस जाता है. ठीक है, तो पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर प्रिंट होगा, फिर उसके बाद डेराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर प्रिंट होगा. और एक चीज और ध्यान देना है, जब भी हम लोग इस तरह से कुछ डेराइव क्लासेस बनाते हैं तो ध्यान रखना है कि कौन सा कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा. तो इन दोनों में से रेड और येलो में से रेड का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा क्योंकि वो एक्सट्रीम लेफ्ट में है. अगर हम लोग यहाँ पर येलो लिख दें तो येलो का पहले कॉल होगा. ठीक है, तो ये भी सीक्वेंस में जाता है. तो ये भी पता नहीं है ना हमको, तो कौन कौन सा क्लास और हम लोग डाल रहे हैं, मान लो और क्लासेस हैं तो सीक्वेंस में जाएंगे. पहले रेड का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर येलो का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर और कुछ होगा उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. ठीक है, so in that way the constructor will be called, and this is the example of hybrid inheritance. हम लोग को